with negative self. Recording in progress. Gratitude greetings. All of us suffer to some extent with negative self talk, to feeling low, to having guilt, and so many more low vibration, low thought energy, low emotions that don't serve us. What if small tweaks can change our life? Here we have the best expert, Gitika Dadwani, who is calm, who is spiritual, who has worked on her self awareness, and she shares those deep insights so that we transform and make our lives beautiful. We choose to live in a beautiful, high vibratory way. Welcome, Gitika Dadwani. Thank you so much, sir, for welcoming me. And thank you, YouTube family. And thank you, Facebook family. And whosoever is watching us, we welcome you to the Align and Thrive show. And thank you, Sunny, sir. Why do we have guilt? So, if I tell the definition of guilt in simple terms, any emotion which I feel is not good, that I am not accepting. In simple terms, it's that. That's why after experiencing it or after doing it, I am feeling guilty or I am feeling I shouldn't have done that. Okay, but the thing is that अब जो हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, right? We cannot change things that already has happened. But at the same time, we need to judge that why I have done that, and even if I done that, can I improve next time? So the key is the self acceptance. For future, we can be more future ready. And sometimes it is the acceptance that all we need, nothing more than that. Once you accept yourself, you'll be able to judge that whether that was right or wrong. Okay. And yes, reframe it, take action wisely next time. This can be the thing that I want to share. Yeah. Thank you so much, Gitika, for making it so simple. You make everything simple. That's the power of coaching and healing with Gitika. Thank you. Moving ahead. So once we have our shoulds and shouldn'ts, right and wrong in our head, then we keep repeating that I'm not good enough. I'm not a good son. I'm not a good daughter. I'm not a good sister. I am not a good wife. I'm not a good mother. I'm not a good so on, career, professional, whatever. We take over responsibility on ourselves and we are stuck in the pit of should not, right, wrong, the society rules or the false rules. So, what is the solution for that? The thing is that, whenever you think that I am not enough, with whom you are comparing? सो द रूट इज द कंपैरिजन. सबसे पहले कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी के साथ. यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ एंड योर जर्नी विद समवन एल्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट हो सकता है कि कोई लास्ट स्टेप पे हो सकता है आप फर्स्ट स्टेप पे हो सकता है कि दैट दे नीड टू रेस अप बट यू मे नॉट. इट वॉज नॉट मे बी नीडेड फॉर यू. देन वाई यू आर रेसिंग? सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कंपैरिजन ट्रैप से सबसे पहले बाहर आए एंड बी अवर ओन जज. और उसमें ये हो सकता है कि लेट्स से व्हेन यू आर बीइंग योर ओन जज, लेट्स से देयर इज़ वन स्टूडेंट, उसने ये टारगेट रखा, इफ़ आई गेट 85% मार्क्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई विल बी इन top 5 as well. So that's okay and I am happy for that. And
he or she is working accordingly also कि 85%, और जब एग्जाम आया लेट्स से उसको 87 मिले, देन ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी फीलिंग डिलाइटेड, ओ 87% आ गए, अच्छा हो गया सब, दैट्स वेरी गुड. एंड सडनली ही गोज टू होम, and now maybe father and mother is saying, oh, your friend got 95, the neighbor besides us who lives got 93%, at least you should have got 90%. तो फिर अब आपकी हैप्पीनेस कहाँ गई? So the thing is that, you cannot work as per other people's expectations. You have done and you have performed well as per your expectations. And the beautiful thing is, it has given you happiness as well. बट द थिंग इज कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दूसरे लोग हमारे हमारे दिमाग में जो कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, फिर उनसे भी अपने आप को जज करते हैं, एंड वी गॉट कंफ्यूज, एंड हमारी लाइफ इस तरह से ड्राइव होती रहती है. सो इसका एक रीज़न ही है, अगर लेट्स से आपने 85% अपना टारगेट रखा है और आपके 83 भी आए हो, तब आप सोचें कि क्या कर सकता था मैं एक्स्ट्रा, क्या कर सकती थी मैं एक्स्ट्रा, दैट आई शुड हैव गेन्ड टिल 85, क्योंकि 85 तो मुझे चाहिए, दैट्स माई ओन बेंचमार्क. बट लेट्स से अगर आपके 87 आ गए हैं, नाउ इफ somebody says something to you, एंड ड्यू टू कंपैरिजन टू, बाद में जब काम हो गया है, सारे एग्जाम्स हो गए हैं, सारी मेहनत हो गई है, रिजल्ट भी आ गया है, अब आप कंपेयर कर रहे हैं कि कि मेरे पेरेंट्स अगर 90% कह रहे हैं, दैट मीन्स 90 ही अच्छे होंगे. So that is false expectation from yourself, and unrealistic as well, क्योंकि अब तो एग्जाम वगैरह सब हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता. एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने से सही रखो. इवन समटाइम्स पेरेंट्स या जो भी आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ा रहे हो, यू डोंट गेट 95%, 96%, दे माइट बी डूइंग क्योंकि वो खुद किसी से इन्फ्लुएंस हो, ऐसा नहीं हो कि उनका खुद जजमेंट ऐसा हो सकता है उन्होंने खुद ने भी कभी 80% नहीं स्कोर किए हो, लेकिन बिकॉज दे आर सीइंग समवन एल्स, सो नाउ दे आर इन्फ्लुएंस, एंड नाउ दे आर forcing those expectations over you. So I think set your expectations wisely, uh, and be your own judge, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने नेक्स्ट स्टेप्स करें. We forget we are the sun. So many beautiful points. Why compare? In spite of getting 87, you manifested what you wanted, more than what you wanted. You are upset because somebody else's standards are bothering you. And even if you have got 83, don't beat yourself up. Celebrate 83, then, okay, what next? How more? So beautiful, so powerful, so practical. I'm sure all of us watching want to implement this and change our wiring of the brain, reprogram ourselves so that we create a better world, we radiate better vibrations at home or at work. So, if you have to summarize this in 3 habits, 3 life habits, 3 success hacks, 3 happiness hacks, what would that be? Do this 3 and you will have success, happiness throughout your life. Yes, so इसका सबसे first thing I want to say, don't be overcentric towards marks. Even to parents as well and kids as well, जो भी सुन रहे हैं, I want to say that don't be overcentric towards marks. Marks is one way to measure something, but marks is not everything, and I am telling you why. Because अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी है जो आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट, ऑल दो लाइट वगैरह के नंबर्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली देखा जाए तो हम लाइट को भी नहीं मेजर कर सकते, हम फेथ को नहीं मेजर कर सकते, आप लव को नहीं मेजर कर सकते, इवन आप अपने किसी अच्छे हैप्पी एक्सपीरियंस को भी मेजर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेजर दैट एक्सपीरियंस. सो एंड लाइफ इज मच 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 मोर बियॉन्ड नंबर्स.
फिर हम कहते हैं कि हम नंबर्स पे ही सोचते हैं और उदास होते हैं. सो आई थिंक योर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ are created by experience, a good experience, feelings, emotions, not only by numbers or by analysis. So instead of focusing too much on marks, you should think about things, how you can make life more wholesome. अगर 99 की जगह 89% भी आए, खुश रहो. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी गुड इन स्टडीज, बी गुड इन स्टडीज, बट एक एवरेज डिसेंट मार्क्स के बाद यू शुड फोकस ऑन कि हाउ यू कैन direct your child towards more values. It can be honesty, loyalty, or happiness, blissfulness, charisma, compassion, confidence, and leadership, team spirit. इन सबको आप नंबर से नहीं मेजर कर सकते. एंड दीज आर मच 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 मोर ऑफ सिग्निफिकेंस देन numbers. Developing a positive mindset, growth mindset, being optimistic. So ये सारी चीज़ें you cannot measure with numbers. Resilient बनाना अपने बच्चों को. How to be more resilient, how to handle failures. So if you think inculcating these things also apart from learning as well, then I think child's development will be more wholesome. So whether you're a parent, you are yourself, you are working, or you are a youth or a teen, और अगर आप अपने बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं, आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट के बाद ट्राई टू सी how how you can give your child a more wholesome way of living rather than only being mark centric or only being subject specialist. अगर आपका बच्चा 99% ला रहा है, that's very good, but that means they are subject specialist. They're specialized in maths, they're specialized in science. But in order to get specialized in life, you have to learn life skills, and that we teach in Align and Thrive as well. Yes, so much more beyond marks. So let's get our act together and make life wholesome as guided by Gitika Dadwani. Go beyond what cannot be counted in numbers. And somewhere, the comparison is killing us. Our own mind is eating us up. And we end up eating up others. Mostly our children, subordinates, our close family members are affected. So join Align and Thrive with Gitika and Sunny, and let's welcome rewiring, healing in our life. Thank you so much, Gitika Dadwani. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Sunny ji.